How does it sound like to study in an island country where you can fulfill your goals along with living a peaceful and beautiful life? So yes, the country I'm talking about is Malta. It is a small island country which is located in the central Mediterranean Sea, which is in the south of Italy. It is a tourist destination and is preferred by a lot of students for study purpose. In this video, we will let you know about what are the popular education fields in Malta. Is IELTS required? Is Maltese language required? Everything you need to know we will discuss in the video. So stay tuned till the end. फर्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज माल्टीज लैंग्वेज रिक्वायर्ड. तो अगर आपको माल्टीज नहीं भी आती है सो येस यू कैन स्टडी देयर. माल्टा हैज़ 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस. फर्स्ट इज माल्टीज एंड अनदर इज इंग्लिश. सो अगर आपको स्टडी करना है इंग्लिश लैंग्वेज में तो माल्टीज इज़ नॉट रिक्वायर्ड. यू कैन ऑल्सो स्टडी देयर इफ़ यू कम्युनिकेट अ लिटिल बिट इन इंग्लिश. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द पॉपुलर स्टडी फील्ड्स इन माल्टा. सम ऑफ द टॉप पॉपुलर स्टडी फील्ड्स in Malta are arts, science and technology, health sciences, economics, management and many others. The next question arises is, can you study there without IELTS? So yes, अगर आपको IELTS नहीं भी देना है या फिर आपने IELTS का एग्ज़ाम पहले नहीं भी दिया हुआ है तो भी आप माल्टा में स्टडी कर सकते हैं. जस्ट यू नीड टू शो दैम योर MOI सर्टिफिकेट. नाउ व्हाट इज़ MOI सर्टिफिकेट? MOI सर्टिफिकेट इज़ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि आपको अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूव करने के लिए दिखाना होता है अगर आप किसी इंग्लिश कोर्स के लिए जा रहे हैं तो. सो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट MOI, वी हैव मेड अ फुल वीडियो ऑन इट, सो प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज़ MOI. So now let's move on to the average fees. What is the average fees to study in Malta? Your average fees can be dependent on your course, your university, बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5,000 euros to 7,000 euros पर ईयर, विच इज़ इन इंडियन रुपीज़ अराउंड 4.5 lakhs to 6.5 lakhs. Following the fees structure, let me know you about what are the top institutions that you can choose from in Malta. So the top institutions are University of Malta, Malta College of Arts, Science and Technology, London School of Commerce, St. Martin's Institute of Information Technology, the Queen's Mary University of London in Malta. Apart from this, most of the colleges in Malta provide UK affiliated courses and degrees, so you don't have to worry about the authenticity. So as we have discussed many key points about studying in Malta, you must be thinking, what about the living expenses? जनरली अगर आप टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जा रहे हैं तो आपके एक्सपेंसेस थोड़े से हाई हो सकते हैं बिकॉज ऑफ हाई होटल चार्जेस, रेस्टोरेंट चार्जेस. बट अगर आप एज ए स्टूडेंट जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे. इट इज़ एन अफोर्डेबल कंट्री. 500 euros to 800 euros पर मंथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर लिविंग पर्पज़. सो बिसाइड्स अकोमोडेशन आप फूड और अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 400 to 500 euros. So total you can expect around 1,000 to 1,200 euros per month as monthly living expenses. So like many other European countries, आप माल्टा में भी स्टडी के साथ वर्क कर सकते हैं but the limit is 20 hours per week. Apart from this, so if I talk about the salary, you can expect to earn around 4 to 5 euros per hour, which means you can earn around 800 to 1,000 euros per month as a part-time worker in Malta. What if you can't afford this much fees but are still passionate about studying in Malta? So here are some of the top scholarships that you can apply for. First is Malta Lingua Scholarship, which is given for English language studies. Next is Malta Art Scholarship Scheme, which is given to art students. Third one is Malta Sports Scholarship Scheme, which is given for sports programs. Next is Malta Endeavour Scholarship Scheme, which is given for finance, health, etc. fields. So there are some more scholarships like this that can cover your tuition fees and maybe your living expenses too. So that's it for this video. If you still have any doubts regarding studying in Malta, please let us know in the comments. Thank you for watching.